Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6. Simple and compound interest. G. Introduction. Suppose a person wants to start a business. Obviously, he needs money to run the business. If he has not enough money to run the business, then he must borrow or lend some money from an other person or from a bank or on certain conditions. G. If he has not enough money, अगर उसके पास मुनासिब पैसे नहीं है to run the business चलाने के लिए, then he must borrow, वो उधार लेगा some money from an other person, किसी दूसरे आदमी से, or from bank या बैंक से, on certain conditions, कुछ conditions या कुछ जो है ना शराइत पे वो पैसे लेगा डी. These conditions may include time period of returning to money, demand of some extra money या interest etc. कहता है कि these conditions, ये जो शराइत है ना, ये जो conditions हैं, may include time period, इसको पर टाइम पीरियड को पर डिपेंड करके इतनी देर में वापस कर दूंगा, या डिमांड ऑफ सम एक्स्ट्रा मनी, या कुछ ज्यादा पैसे लूंगा, अगर लाख दिया है तो 1.5 लाख लूंगा, वगैरह वगैरह. इंटरेस्ट. दिस चैप्टर इज कंसर्न विद सॉल्विंग सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच arise between two parties or two persons. That is, how much extra amount should be charged, for how much time money should be borrowed, what should be the rate of interest, etc. भाई देखिएगा, the concept of interest has also the application that is not related to the money, which is called population growth rate. G. The concept of interest has also the application that is not related to money, which is called population growth rate. We shall first examine the nature of interest and its computation. Then we shall discuss several different investment situations and computations related to each. जी पहला है जी प्रिंसिपल. भाई देखिएगा, ये हमारे जो है ना कुछ इंट्रोडक्शन है, ये बेसिकली अब थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. प्रिंसिपल का ए मनी विच इज इन्वेस्टेड आर बारोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल. इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल. भाई कहता है ए मनी विच इज इन्वेस्टेड, जो आपने खर्च की है, इन्वेस्ट की है, जो आपने लगाई है या उधार ली है, इज कॉल्ड कैपिटल. उसको आपने क्या बोलना, प्रिंसिपल. इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल या सरमाया भी इसको बोलने हैं. अब इंटरेस्ट. भाई इंटरेस्ट इज अ फी विच इज पेड फॉर द यूज ऑफ मनी, विच इज यूज फॉर द यूज ऑफ मनी. भाई इंटरेस्ट इज अ फी. By interest is a fee which is paid for the use of money. It is an extra money. Which the lender demands from the borrower for the use of money in a fixed period of time. भाई कहता है, अगर एक बंदे ने लाख रुपया लिया ना, तो वो कहता है जी कि मैं आपको साल में वापस करूंगा, तो आपको 1.5 लाख दूंगा, ठीक है जी, कोई एक्स्ट्रा मनी पे करूंगा जी फॉर टाइम पीरियड. इंटरेस्ट इज यूजुअली पेड इन प्रोपोजिशन टू द प्रिंसिपल ओवर द पीरियड फॉर विच मनी इज यूज्ड. भैया देखिएगा, इंटरेस्ट इज यूजुअली पेड इन प्रोपोर्शन. भाई वो किसी तनासब के थ्रू जो है ना वो इंटरेस्ट पे करेगा या प्रॉफिट पे करेगा, ओवर द पीरियड और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए. बट इंटरेस्ट की जो ये लाइन आपने जरा ध्यान में रखें, इंटरेस्ट इज अ फी विच इज पेड फॉर द यूज ऑफ मनी.
which is paid for the use of money. भाई इंटरेस्ट कैरिंग वो फी है which is paid for the use of money. आगे amount or maturity value. Amount or maturity value. Sum of principal and interest is called amount. जी sum of principal भाई वो जो आपकी प्रिंसिपल या कैपिटल है प्लस इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट. यानी कि अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल या कैपिटल प्लस इंटरेस्ट. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए प्री डिसाइडेड परसेंटेज टू इंक्रीज द प्रिंसिपल फॉर ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. भाई ए प्री डिसाइडेड परसेंटेज टू इंक्रीज द कैपिटल for a given period is called rate of interest. It is denoted by R या I, etc. Rate of interest is normally expressed in percentage, that is 10% per year, 5% per month, 2% half year, etc. If R बराबर 10% per year, then it means that rupees 10 will be increased for each rupees 100 every year. If R is equal to 5% per month, it means that rupees 5 will be increased for each rupees 100 for every month, etc. G. Rate of interest usually tell us how much amount should be increased in the principal after completing the period. G. By rate of interest actually tell us how much amount should be increased in the principal after completing period. That is, for example, if we deposit rupees 1000 in the bank at 10% rate of interest, then after 1 year, 100 into 10 by 100, 1000 into 10 by 100, 100 rupees will be increased in our amount. Again, amount in account after 1 year क्या होगा जी, 1000 plus 100 is equal to 1100, etc. But types of interest, there are two types of interest. एक है simple interest, दूसरा compound interest. जी एक है simple interest, एक है compound interest. Simple interest, when interest is calculated for every period only on the principal, then the total interest gained on all the period is called simple interest. But when interest is calculated for every period only, but when interest या profit is calculated for every period, हर period के लिए on the capital या वो जो है ना वो कैपिटल कह लें या अमाउंट कैपिटल या प्रिंसिपल, then the total interest gain on all the period is called the simple interest. The principal plus simple interest gain is called amount. Amount बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो A बराबर होगा P plus SI, सिंपल इंटरेस्ट. Before derive the formula for finding simple interest and amount, we consider an example. First, suppose a person borrowed rupees 100 with 10% rate of interest, simple interest, if for 3 years. Then simple interest for 1 year क्या होगा, 100 into 10%. तो वजन वो क्या होगा, 100 into 10 by 100 is equal to 10 rupees. तो amount at the end of first year, 100 plus 10, 110. Amount the end of the second year, 110 plus 100, 120. Amount at the end of third year, 120 plus 10 is equal to 130. That is, every time the interest of rupees 10 calculated on principal of rupees 100 is added to get the amount after first, second and third years. Total amount interested for 3 period क्या होगा भाई, 3 into 10, that is 30. It can also be obtained that simple interest बराबर होगा amount minus principal
भाई अमाउंट हमारे पास क्या होगी 130 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹30 इज इक्वल टू ₹30 जी। बदल देखिएगा। नो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी ड्राइव द फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। भाई सपोज करने प्रिंसिपल है पी या कैपिटल है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, नंबर ऑफ पीरियड्स एन आर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड भाई पी आर होगा, ठीक है जी। सेम ऑन ऑल पीरियड्स, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा पी प्लस पी आर, इसको A1 कह देते। भाई सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड पीरियड A1 जमा सेल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट P प्लस पी आर प्लस पी आर, भाई एक होगा P प्लस 2PR, इसको आप A2 कह देंगे। भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड पीरियड A2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट भाई P प्लस 2PR प्लस PR, P प्लस 3PR, इसको A3 कह दें एंड सो ऑन। अमाउंट द एंड ऑफ द nth पीरियड वो P प्लस NPR या इसको वर्जन P प्लस PRN कर लें, एक ही बात है जी। भाई देखो ना ये NPR तो P कॉमन निकाल लें, हेंस अमाउंट बराबर होगी प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट फॉर nth पीरियड, तो P प्लस PRN, P कॉमन निकाल लें 1 प्लस RN एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर nth पीरियड क्या होगा PRN। भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर nth पीरियड क्या होगा PRN। भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर द nth पीरियड क्या होगा PRN जी। अब ये कुछ रिमेंबर चीजें रखनी थी। पहला नंबर कहता है इट जी, it is essential that the time period for R and N must be consistent with each other. Must be consistent with each other. That is, if R is given as percentage per year, then N should be also be in terms of number of years. If R is given as percentage per month, then N must be stated in the number of months, etc. भाई दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर पर ईयर की बात होगी तो दोनों पर ईयर के लिए होंगे, अगर पर मंथ की बात होगी तो दोनों पर मंथ के लिए होंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली इन जनरल अनलेस सम अदर पीरियड इज स्टेटेड। कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली। भाई सिंपल इंटरेस्ट का मतलब एनुअल के साथ होता है आमतौर पर, अनलेस स्वाय सम अदर पीरियड इज स्टेटेड। हाँ, अगर उसने कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी हुई थी। इफ इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली देन टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड रेट इज हाफ्ड। इफ इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली देन टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड रेट इज डिवाइडेड बाय 4। इफ इंटरेस्ट इज पेएबल monthly, then time is multiplied by 12 and rate is divided by 12। ये जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 16 से 17, सूरह मोमिन, पारा नंबर 24। खुलासा जी, इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने बताया क़यामत के दिन लोगों को जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो सब लोग बेपर्दा होंगे। अल्लाह ताला ने बताया क़यामत के दिन लोगों को जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो सब लोग बेपर्दा होंगे। उनकी कोई बात भी अल्लाह से छुपी नहीं होगी, उनकी कोई बात भी अल्लाह से छुपी नहीं होगी। सब लोगों से पूछा जाएगा आज किसकी बात चाहिए जी। सब लोगों से पूछा जाएगा कि आज किसकी बात चाहिए, तो सब कहेंगे अल्लाह वाहिद क़हार की जी। तो सब कहेंगे कि अल्लाह वाहिद क़हार की। उस दिन हर इंसान को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा।
उस दिन हर इंसान को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। जिनके अमाल अच्छे होंगे उन पर कोई जुल्म न किया जाएगा। और यह भी फरमाया कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। और यह भी फरमाया कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। जी, ये इसकी अरबी का मतलब है जी, अरबी है जी। और ये इसका तर्जमा है जी, आयत नंबर 16-17 जी, आयत नंबर 16 से 17 सूरह मोमिनून है, अल मोमिन है, और पारा नंबर है 24 जी। वंस अगेन इसका खुलासा हम पढ़ते हैं जी। इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने बताया क़यामत के दिन लोगों को जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो सब लोग बेपर्दा होंगे। उनकी कोई बात भी अल्लाह से छुपी नहीं होगी। सब लोगों से पूछा जाएगा आज किसकी बात सही है, तो सब कहेंगे कि अल्लाह वाहिद का खार की। उस दिन हर इंसान को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। जिसके अमाल अच्छे होंगे उन पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। और यह भी फरमाया कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। और अल्लाह हमें जो भी नेक काम करने की तौफीक दे वो सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए हों और उसमें रियाकारी शामिल ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।